हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। मो ललित सर केमती अच्छा आपण मैंने बहुत सारा पिलांकर डिमांड पर एक्चुअली मु क्वेश्चंस करी भाबुथली बट टिके डिले हो गला। सो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस किछि अछि जोंटे कि ओपीएससी रो फाइनल आंसर की सहित मु टिके डाटा सह आपन को देबी, आपन गोटे क्लैरिटी पाई जिवे। एवं ओपीएससी रियली एवरी ईयर आप देखिथिबे कि बहुत सारा क्वेश्चंस भूल रहउची, आंसर भूल रहउची, क्वेश्चन ऑप्शन ठीक से दे पारनती। 100टा क्वेश्चंस गोटे ओपीएससी 100टा क्वेश्चन गोटे टीम बनेगी ये क्वेश्चंस बनै पारुनी। दैट इज वेरी पैथेटिक बेसिकली फॉर बेसिकली जिते जिते हाँ गोटे अधे क्वेश्चन भूल है ठीक अच्छी सब थर 4-5टा 6टा एमती क्वेश्चंस भूल होउची, ऑप्शंस माने चेक करना। देयर शुड बी ए कमिटी जे कि रेकमेंड करिवो, जे कि 3टा 4टा स्टेज होबा दरकार कि केमिति क्वेश्चंस को स्कैन करिवो एवं माने एरर को रेक्टिफाई करिवो, नंबर ऑफ लेवल्स रहबा दरकार। देन 100टा क्वेश्चंस इज नॉट ए बिग डील। गोटे एत बड़ ऑर्गेनाइजेशन तार मेन एग्जाम एटा ओपीएससी रो सेतिक से कंडक्ट करि पारुनी। एटी बहुत माने लाज लागुची कि एत बड़ ऑर्गेनाइजेशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जे कि गोटे भलो क्वेश्चंस ठीक से पिला कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पारु नाहंती एवं कॉन्फिडेंटली बेसिकली सी मेंस में प्रिपेयर भी करि पारु नाहंती बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। सो एवरी ईयर दे आर डूइंग दिस, दे आर प्लेइंग विथ द लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। तांकर किसी फरक पड़ेनी, तांकर काम वाला एग्जाम ग्रहण करवा चाहे 100 आसतु या जातु टॉप 200 चूज करार अच्छी तो तांको सेटा फरक पड़ेनी। बट रियली जी प्रिपेयर कर फरक पड़े, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आम देखा किसी क्वेश्चंस जोटे कि प्रथम क्वेश्चन सेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अच्छी। हु वाज द फर्स्ट लीडर, हु वाज द फर्स्ट लीडर टू मूव रिजोल्यूशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट लीडर टू मूव द रिजोल्यूशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जोटे कि डिमांडिंग यूनिफिकेशन ऑल ओडिया स्पीकिंग पीपल। सो आपण मैंने देखिए आंसर आपण मान को मधुसूदन दास ही सबुआडे देखा मु ओडिशा जोटे कि रिव्यू जोटे कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा थाए या यार भी मु क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस ओडिशा से भी सर्च कली। देयर इज माने सेमती जो ऑप्शन देनी जेमती कि नीलकंठ दास कथा कहैछि, ओपीएससी देइछि नीलकंठ दास बट आपण करेक्ट आंसर हम मधुसूदन दास। सो यार डॉक्यूमेंट है ओडिशा रिव्यू रे आपण पाई परिबे, से सी स्पेशली देइछि कि मधुसूदन दास रूल विषय एठी मेंशन करछि, आपणकर देखि परिबे एठू मधुसूदन दास। सो मधुसूदन दास रूल बहुत अच्छी। सो ये करेक्ट आंसर हम मधुसूदन दास नॉट नीलकंठ दास। जदि क्या पाखे या भल किसी सोर्सेस अच्छी लेट मी नो, आप मैंने कमेंट सेक्शन दे पारे या टेलीग्राम में छाड़ी पारे आम ओएस हब ऑफिशियल। सिमिलरली कंसीडर फॉलोइंग साइड अबाउट द रामसर साइड, यहाँ भी माने आश्चर्य आंसर। Ramsar site is declared as based on its ecological importance and this is true. So then Chilika Lake was the first Indian site to added in the yes Chilika first dita ko Chilika Kaula dio and as of 2023 India is more than 75 Ramsar site। yes एटा मध्य 3 ठीक अछि। सो 1 2 3 होबा कथा, एटा आंसर होबा कथा बट ओपीएससी देछि सी आंसर। सो यहाँ भी आपण मैंने जाकि देखिपारे चिलिका एलंग विथ केवलादियो नेशनल पार्क फर्स्ट इंडियन साइट टू डेजिग्नेट रामसर साइट। सो ये क्वेश्चन यहाँ ऑप्शंस ठीक हवा दरकार बा ये ऑप्शन से मैंने भूल नहीं जाइए, सी आंसर देइछन्ती माने 1 and 3 नहीं। सो यहाँ ठीक हेनी, करेक्ट आंसर विल बी डी हम 1 2 and 3। आपड़ जदि कंजर्वेशन साइट देखीदे नंबर ऑफ कंजर्वेशन साइट कौन कौन अच्छी, थ्रेट मैनेजमेंट ये सब आप डिटेल्स डाटा आप पाइबे। ये विकिपीडिया डाटा मुझे आप डिटेल्स डाटा या रिलेटेड इनफॉरमेशन पाइबे। देन अगेन यहाँ भी क्वेश्चन डिलिमिटेशन कमिशन। सो डिलिमिटेशन एंड इट्स इम्प्लिकेशन। डिलिमिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्री फॉर लोकसभा and state assembly constitution to represent changes in the population। population change होची every 10 year हमें population census होची तो से अनुसार change होगा दरकार, that is true। then delimitation commission is appointed by president of India and its order have to be force of law and cannot be challenged in any court, that is true। and the primary objective of the delimitation is to ensure that all constituency have roughly equal population, thereby upholding the principle of one person one vote प्रिंसिपल को फुलफिल करिया पारे। ये तीनटा ठीक अच्छी। द लास्ट वन सी कहला कि एटा भी भूल अच्छी केमिति ना करंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। यस विथ नेक्स्ट वन मैंडेटेड आफ्टर द
फर्स्ट सेंसस फॉलोइंग 2026 जोटा कि आगु को हम दिस इज ऑल्सो ट्रू अच्छी दिस स्टेटमेंट 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 एंड 87 अमेंडमेंट 2003 proves the delimitation based on 2001 census till first census after 2026 ये अपन डायरेक्टली पाई पर which means next exercise will take place after 31 पर एबे तो 27 रहउची सो ये एग्जैक्टली एटा लेखा हेची एटा के एग्जाम माने तुम बुक्स रो सो बट ए जिनसटा को से कंसीडर करिनी सो ये ए देची आंसर बट वी आर स्टिकिंग विथ डी यू कैन स्टिक विथ डी ओके पोस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ये देखो 4 थर डिलिमिटेशन टेकन प्लेस 52 63 73 2002 with the number of seat fixed and a readjustment on the first 3 exercise 42nd amendment रे frozen करा है लोकसभा सीट 25 years ପାଇଁ 2001 सेंसस until 2001 सेंसस 84 amendment 2001 that further delayed delimitation 25 वर्ष and 87 amendment 2003 but only rearrangement of constituency border the basis of 2001 census without changing number of seat allocated. Current status the present strength of Lok Sabha 543 was fixed on the basis of 1971 census. The division of each state into territorial constituency is readjusted on the basis of 2001 census. Okay, so ये तुम मन रखिया दरकार अगर 2021 रो सेंसस हमर हेइनी 2021 रो सेंसस कोविड जो हेइनी तो 2026 रे हबो 2026 रे हबो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिलो केतळे क्वेश्चन सो 34 क्वेश्चन सेक्शन बी रे हमें करू जे सेट बी who has been appointed as India's new deputy national security advisor so eta straight forward questions थिला पंकज कुमार सिंह रहिबो एटा तो इजी अछि देखि देबो पंकज कुमार सिंह रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन जनवरी 2023 हिज टर्म वाज एक्सटेंडेड फॉर वन टर्म इन अगस्त 2024 देयरफॉर एज ऑफ अगस्त 2025 पंकज कुमार सिंह होल्ड द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सो फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी से अनिश दयाल सिंह अपॉइंटेड डेप्यूटी एनएसए सो ये एटा टिके एठी सी आसुची बी आसु सो एटा लेटेस्ट जो देखिबो बी हबो सो एटा डी आंसर टाको तुमरो रखिबो एटा तो को समय न्यूज़ ता नेइची से माने सो से अनुसार अनिश दयाल सिंह तो एटी माने सी हबो तो एटा भूल अछि माने जहा भी हेले भी तुमरो आंसर ता देखि दबो भल से लेटेस्ट कोन देइची देन एटा हला फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ द सो एटा कंफ्यूज थिला बट मोर और लेस बी ही ठीक हबो एटा बी ही आइरिस हेई पारे बट आइरिस कंसीडर जदी एटा न थांदा त आइरिस हेई थांदा सो बी विल बी द करेक्ट आंसर एटा ठीक अछि दीटा अगर ये तो देखियो यदि एचएसआरए प्रीवियसली नोन एचआरए was a left wing Indian revolutionary organization founded by Satyendra Sanyal after changes in Bhagat Singh ideology and influence of Russian revolution. So Bhagat Singh ideology हेले Russian then they meeting कले वगैरह ये सब देखिले. Which category under IUCN? एटा भी गोटे interesting कथा कौन IUCN category classified not directly recognized in Indian wildlife sanctuary. Basically 72 wildlife protection 1972 categorized species based on their conservation status but does not directly recognize the term endemic as classification. So ये सब classification न थाए. So basically C एमती classification ही न थाए. Critical endangered vulnerable extinct in the world ये classification थाए. But endemic classification न थाए. Endemic classification न थाए तो से अनुसार तुम्हारा correct answer हबो C हबो ना कि D extinct in the world. So extinct in the world सेमिति किसी नहीं ये कैटेगरी इथरे भी अच्छी सो IUCN जोंडे की रेड लिस्ट रे यूजेस कैटेगरी सच एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरेबल एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड एटा IUCN रो अच्छी एटा नहीं कहूँ क्वेश्चंस पचाची नॉट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज ओके सो IUCN रेड लिस्ट सो देखो एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड ये सब कैटेगरी अच्छी सो नहीं कहूँ सी so then this one basically आपण माने more or less ठीक अछि आंसर टिके आपण माने खाली मैच एमसी राजा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है एमसी राजा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन तो 3
ऑल इंडिया हरिजन संघ हाँ एटा भी गोटे ठीक नहीं बेसिकली हरिजन ऑल इंडिया हरिजन संघ है महात्मा गांधी D4 हम D4 हेले बी या सी भितर आंसर हम D4 and C3 that means hey this one B will be the sorry C D4 C1 D4 D तो 4 हबनी ए केबे 4 हबनी तो डी आंसर हबनी एटा सी आंसर हम जगजीवन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस और इंडिया डिप्रेस क्लास B2 और इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस एडवोकेटिंग सोशल एंड अपलिफ्टमेंट ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग B.R. आंबेडकर C1 सो बेसिकली C1 जो देखियो एटा होची सो ये ऑप्शन ही भूल अच्छी ये क्वेश्चंस नाकच हवा दरकार सो से अनुसार डिप्रेस क्लास एसोसिएशन MG राजा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन तो तुम्हें फॉलो ये जो इथरो आंसर किछि नाही सो एटा को हटेबा पड़ियो ये क्वेश्चंस हरिजन सभा महात्मा गांधी करिसेन तो इथरो किछि डाउट नाही ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल रे ये महात्मा गांधी कर सो एटा करले D4 होची बट स्टिल देन एठी सेट होनी consider the following statement concerning the multi-dimensional poverty index ये टिके डाउट अच्छी एक क्वेश्चन सा देखि दियंतु India's MS MPI uses health education and standard of living यहाँ पर देखे जानी समझते the MPI published by Niti Aayog using data primarily from the National Family Health Service MFSS global MPI is released annually by the United Nations Development Program and Oxford Poverty and Human Development Initiative. India's MPI include indicators such as nutrition, school attendance, access to clean cooking fuel, and among the others. ये statement correct statement कोनटा ये देखिया को कोई so जो देखियो ये questions रो answer देइछु OPSC B means 1 2 and 4 1 2 and 4 the global MPI released annually by United Nations program UNDP and Oxford Poverty Human Development ये भी एटा ट्रू अछि सो D हबो आंसर D हबो ये आंसर D हबो ऑल ऑफ द अबव हबो सो जो माने ऑल द फेयर स्टेटमेंट करेक्ट सो तुम देखि दबा उथरे MPI के रिलीज करे UNDP एंड OPHI ये अपन देखि देबे समस्ते देखो 2000 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ओवरलैपिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड क्लाइमेट ये सब देखियो OPHI एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस okay with OPHI and Human Development Report Office of United Nations UNDP एमाने दिजन एनालिसिस करी कि देइचंदी सो एठी पूरा सही वेबसाइट रु मो बाहर करली सो ता परे जदी ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी 2020 ओवरलैपिंग हार्डशिप एंड पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट दिजन मिसी करिसंती सो एते आउ क्लियरिटी परे सो ये आंसर भी एटा भूल अछि सो तुमरो डी इज करेक्ट आंसर जहार डी हेथिबो तार करेक्ट आंसर हेथिबो Then Mughal emperor appointed first separate Subadar of Odisha. In which year did Odisha become separate Subha? Second Subha basically ये आंसर देइछि तुमरो जहांगीर 1707 1607 but Akbar already so Odisha became part of Mughal empire in 1593 it was conquered by Raja Man Singh a Mughal Mansabdar under Akbar it was during the Akbar reign that the Subha system of provincial administration was established first Subadar of Odisha under Mughal emperor Muhammad Bakar Khan 1606 रे ए 1607 रे तो औरंगजेब केमथि हिजु हाउ जहांगीर यस 1607 रे याकू अपॉइंट करा गला बट अकबर अंडर के रूलर जदी कहिबो ओके फर्स्ट सेपरेट सुबेदार फर्स्ट ओडिशा फर्स्ट सुबेदार ओडिशा अंडर मुगल एम्पायर वाज मोहम्मद बाकर खान basically appointed in 1607 when Odisha carved off a separate Suba under the Mughal rule. Okay, that is true actually if statement eta A is not correct so D is the correct one. D is the correct one. एटा भी ठीक अछि एटा भूल नाही ये क्वेश्चंस ता ठीक अछि सर बेसिकली क्वेश्चंस टिके पचारि छ अलगा आंसर से अनुसार टिके भूल दिया आइतला देन ये क्वेश्चंस ता
सो आम ऑप्शन टी भूल जाइलु आम देइलु ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी हम सो ये भी हम सो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ठीक थिला एठी लेखा हितला ठीक बट ए जो देला बेले को भूल भाल दिया हितला सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर सो ये देखि परिबो देन लास्ट वन जो देखिबा होई एटा केवल ऑप्शन भूल भाल देछि सबुथरे एबीसीडी 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 सब दे दिछि सो ये क्वेश्चंस ड्रॉप्ड फ्रॉम द इवैल्यूएशन ये हो जाइए सो मेंस मेंटरशिप सोशियोलॉजी ऑप्शनल फाउंडेशन एंड सोशियोलॉजी मेंटरशिप जॉइन करि परिबे जीएस रो मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज मध्ये जॉइन करि परिबे जल्दी जल्दी जॉइन करंतु बेस्ट क्लासेस पाइबे डेडिकेटेड एफर्ट आई विल सिट डाउन आई विल टेक केयर ऑफ योर आंसर राइटिंग लेट बेसिकली गिव एंड टेस्ट योरसेल्फ बहुत कम पिला देबे 30 पिला मात्र आमे दउचंती टेस्ट सीरीज समस्ते आपण टेस्ट करि परिबे नॉलेज सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत सिलेक्ट होइचंती एवं आगु सिलेक्ट होई जंती सोशियोलॉजी मेंटरशिप मेंस पाई एवं सोशियोलॉजी फाउंडेशन मध्ये नै कि आपण फेब्रुआरी 20 भीतर कंप्लीट करि परिबे तो डू जॉइन थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल जय जगन्नाथ नमस्कार।